spring constant K is given by F upon X. Or you can always say it's force needed to elongate or compress the spring by unity or by unit length. It's force needed to elongate or compress the spring by unity. If X is equal to 1 unit, the spring constant is equal to force. मैं एग्जैक्टली यहीं से अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. देखिए, this is a spring at its natural length. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The spring at its natural length have got 9 turns. It have got natural length of L and it have got 9 turns in it. Now, I wish to elongate the spring or I wish to compress the spring. मैं दोनों ही सिचुएशन को स्टडी करता हूं. In order to elongate it, I need to apply some elongative force. At any instant, it's elongated by X. At any instant, it's elongated by X, and in order to elongate it by X, a elongative force of Kx is applied at this instant. जब इस पर x से elongation है तो इस तरह से Kx से इसको खींचा जा रहा होगा. This force is elongative force. अब मैं कहता हूं this elongative force Kx is a variable force. स्प्रिंग में जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे उसको एलोंगेट करने के लिए, उसको x से एलोंगेट करने के लिए जो फोर्स नीडेड है वो भी बढ़ता जाएगा. वी यूज्ड टू से हियर दिस फोर्स, एलोंगेटिव फोर्स kx इज वेरिएबल. हियर एलोंगेटिव फोर्स kx is a variable force. यह एक वेरिएबल फोर्स है. We used to say some external agent, some external source must be applying this force. कोई पर्सन, कोई एजेंसी इसको पकड़ के ऐसे खींच रही होगी. ध्यान रहे, जितना फोर्स पर्सन इधर लगा रहा है kx, उतना ही फोर्स यह रिजिड वॉल, यह रिजिड सपोर्ट जिससे स्प्रिंग बनी हुई है, बंधी हुई है, वहां से भी लग रहा है. मगर दिस इज अ फिक्स्ड एंड अ रिजिड सपोर्ट. इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है. इस जगह पर फोर्स की एक से स्प्रिंग एलोंगेट होती जा रही है. नाउ
wish to determine the work done by this force to carry out this elongation. इसको इसकी नेचुरल लेंथ से x लेंथ तक elongate करने के लिए जो वर्क डन हुआ है, आई विश टू कैलकुलेट दैट वर्क डन. If it is further elongated by dx length, if it is further elongated by dx length, then in order to do this dx displacement, इसको dx से displace करने के लिए we need to do some work of, and that is differential work, and it's f dot dx. This is differential work done by the external agent. जो फोर्स लगा रहा है वो इतना वर्क करेगा. डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट से इसको डिस्प्लेस करने के लिए डिफरेंशियल वर्क होगा. दिस वर्क डन टू डिस्प्लेस इट बाय डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx. अब we always write it in this fashion. It's mod of f into mod of dx into cos of angle between them, and observe that force and dx, they are parallel, they are collinear, the angle between them is 0 degree, so इस जगह पर हम cos of 0 degree लिखेंगे. Now, mod of force, magnitude of force is kx, and magnitude of dx is simply dx, and cos of 0 degree is plus 1. So, differential work needed to elongate this spring by dx length is this, kx dx. This is the differential work needed to elongate the spring by dx length. Up, I wish to calculate the total work done in order to elongate the spring from its natural length to elongation of x. इसकी नेचुरल लेंथ से लेकर x तक elongate करने के लिए मुझे टोटल वर्क निकालना है. Work is a scalar quantity, it should be scalarly added. We had determined differential work. In order to calculate the total work, we need to add differential work, and adding differential work means integrating dw. The work done is integral of dw. It would be integral of kx dx. Now, this work done, now this k is a constant, इसे हम इंटीग्रल साइन के बाहर लिख देंगे और इंटीग्रल साइन के अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ x dx. Now, इंटीग्रेट करते समय वी नीड टू पुट द लिमिट्स, इनिशियल लिमिट्स एंड फाइनल लिमिट्स. हम इनिशियली कहां से कहां वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं. इनिशियली व्हेन स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, एलोंगेशन इज 0. जब यह स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, इसका एलोंगेशन 0 है, x की वैल्यू 0 है. And when the spring is elongated by x, the value of x is x. So initial elongation, initial value of x is 0, initial elongation is 0, final elongation is x. Now, इस जगह पर अब हमें इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना है. वह फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं. Integral of x to the power n
dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1. This is the formula. मैं n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, x to the power 1 dx इसी फॉर्मूले में, एंड आई राइट वर्क इज इक्वल टू k इंटू, इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लोअर लिमिट 0 इधर और अपर लिमिट x इधर. x to the power n dx, तो इट्स इंटीग्रल इज x to the power n plus 1 upon n plus 1, n की जगह पर 1. Now, after integrating it, we substitute the limits. First upper limit minus lower limit. Work done is k x square by 2 minus 0 square by 2, or work done is half k x square. नाउ हमने यह निकाला क्या है, इसको हम फिजिकली बात को समझें. स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग को जब हम एलोंगेट करना चाहेंगे, इसको खींचना चाहेंगे, इसको एक्स से एलोंगेट करना चाहेंगे, इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू डू सम वर्क, वी नीड टू पुट सम एनर्जी इनटू इट. हम जीरो लेंथ से जब तक उसको एक्स लेंथ तक खींच कर लाएंगे, ड्यूरिंग दिस फिनोमेना वी हैड डन दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इनटू इट, और वी हैड एडेड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू इट. ऐसा करते समय हम स्प्रिंग के अंदर इतनी एनर्जी डाल देंगे. अब यह जो एनर्जी है, यह स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, और स्प्रिंग के अंदर यह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी. बिकॉज वी आर चेंजिंग द शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग. जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग का शेप चेंज कर दे रहे हैं, उसका साइज बदल दे रहे हैं, उसका ज्योमेट्री बदल दे रहे हैं. एंड द एनर्जी possessed बाय एनी सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री, वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी. तो जो भी कुछ हम वर्क कर रहे हैं, ये उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रही है, स्प्रिंग के अंदर चली जा रही है. नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem says that work done is equal to change in energy. Work done is equal to change in energy, and in this situation the change in energy is taking place in the form of potential energy. Hence I will say work done is equal to change in potential energy, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी को कई बार U से भी डिनोट कर देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी समटाइम इट्स डिनोटेड बाय U.